नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। कल इंदौर शहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम था, माफ़ कीजिए। वहाँ गया तो शास्त्रीय संगीत की महफिल सजी हुई थी और एकाएक अंत में एक डांस परफॉर्मेंस आई। ओडिसी डांस की परफॉर्मेंस थी और ओडिसी डांस की को परफॉर्म कर रहे थे जाने माने ओडिसी डांसर सौम्य बोस, जो कि भुवनेश्वर से आए थे। और उनका डांस परफॉर्मेंस, उनके रिफ्लेक्सेस, उनका मूवमेंट देखकर ऐसा लगा कि ऐसे कलाकारों के साथ ज़रूर बात की जानी चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सौम्य बोस, जो कि ओडिसी डांसर हैं, भुवनेश्वर से आए हैं। सौम्य, वेलकम टू अवर शो। नमस्ते। सो यू आर इन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, 6 time winner of the cleanest city. So how you are feeling in this city? Actually, it feels great when you see this kind of cleanliness. Then it makes you feel proud, and mostly it makes you feel that people are concerned about this thing, and this is really a good habit. And I think all other cities should go in that direction and learn from this cleanliness. सही बात है। इनका मानना है कि जो शहर के लोग हैं और उनसे अन्य शहर के लोगों को भी सीखना चाहिए। पर यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से, जिस डिसिप्लिन के साथ कल ओडिसी डांस सौम्य बोस कर रहे थे, वो भी एक सीखने की बात है। जो लोग कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, और स्पेशली जो डांस की क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक लैंडमार्क सौम्य बोस हो सकते हैं। मैंने कई सारे डांस परफॉर्मेंस देखे हैं, तो कुछ बेहतरीन जो डांस परफॉर्मेंस देखे उनमें से एक सौम्य बोस का था, जो कल मैंने देखा था। सौम्य, इट वाज आई थिंक अ वेरी गुड शो। You performed late, but whatever you performed, it was excellent. The reflexes, the movement, everything was very fine, very much impressive. So, how you keep yourself fit? How I keep myself fit? This is a very good question. Actually, for a dancer, it's important to keep practicing whatever the situation comes, because as we all know, we have gone through a pandemic. So for last 2 or 3 years, we have to face a situation which we never expected. So, but in my thinking, I kept practicing, and I thought the time this pandemic will go away and will come back to the stage. And by the blessings of God, it happened. And but I never lost the hope for dance. So my thinking is practice, and as well as keep myself fit, so that I can dance. सही कहना सौम्य बोस का कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सौम्य बोस ने कहा कि मैंने डांस को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी थी। पैंडेमिक आने के बाद जिस तरह से कोरोना का प्रभाव था, उस दौरान भी प्रैक्टिस को जारी रखा। क्या वुड यू लाइक टू से दैट ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड यू परफॉर्म्ड एट होम एंड इट इज द सीक्रेट ऑफ आवर फिटनेस, और ऑलवेज यू आर फिट लाइक दैट ओनली? No, not secret of fitness. Mainly the thing is, as a dancer, we have to make our diet, we have to keep our body fit, and we have to practice as well, like whatever form we are doing, whatever dance form we are doing. But as along with that, we need to make a good habit of eating, sleeping, and doing physical exercises. All things together makes a dancer. सही बात है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र में अपने आप को पारंगत रखना चाहते हैं, तो आपको उतना ही अपने शरीर पर ध्यान देना होगा, खान पान की आदतों पर ध्यान देना होगा, रेस्ट भी करना होगा, वर्कआउट भी करना होगा, और नींद भी पूरी लेना होगी। So Odissi dance performance I saw yesterday, it was really excellent. Again and again I am saying, because I am very much impressed, so I came for an interview with you. What do you say? The Odissi dance has not the reach in the entire country as much as it should. Yeah, but after actually Odissi dance got recognition in late 1950. So after that, it went through a process. But if you compare with other classical dance forms, Odissi has reached to its highest level
it's, I think it's spreading in a very good pace, and almost if you see all over the country, even in abroad, people are taking it, people are learning it, people are I mean, they are giving chance for Odissi performances. Like I, along with all the musicians who performed yesterday, they have traveled a lot abroad. Like mostly one of our musician, he has traveled 30 countries to perform only with the Odissi dancers, so he has accompanied. So yeah, there is a craze for Odissi, and I think it will be coming more in future. सही बात है। इनका कहना है कि 1952 से ओडिसी डांस की शुरुआत हुई है और इतने कम समय में ओडिसी डांस यहाँ पर पहुँचा है, तो उनके हिसाब से ये जो रीच है, ये जो पहुँच है, वो काफ़ी अच्छी है। उनका कंपैरिजन बाकी जो ट्रेडिशनल डांस पैटर्न से, भरतनाट्यम है या कथक है, उनसे था, और उस कंपैरिजन में ओडिसी डांस की जर्नी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा पहुँच चुका है। While you perform duet, so what kind of precautions you take and how you prepare yourself for that? Yeah, like for duet, we have to always think for the grammar. Like we should not go out of our respective grammar. Like if you say about Odissi dance, like in Odissi we have 4 bhangis. Like we say Chauka, Tribhanga, Abhanga, Samobhanga. So when we perform with a different kind of dance form, though all the dance forms are like, all the classical dance forms are like brothers and sisters, everybody, if you see, everything has a similarity, every dance form has a similarity, somewhere you find it, because they all follow Natya Shastra, the scripture of dance. So still we have to be very careful and very specific when you perform a Jugalbandi or duet with the other classical dance form, because you can be influenced or you can influence other form. So you have a responsibility when you perform with the other kind of dance form. सही कहना है इनका कि जब दूसरे डांस फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाता है ओडिसी डांस को, तो बहुत सारी चीज़ें समझने की होती है कि क्या आप उनको परफॉर्मेंस सिखा रहे हैं या आप उनसे परफॉर्मेंस सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी सोच विचार करके, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो अभंग और जो माध्यम है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी जो ग्रामर है उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सो राइट नाउ वी टोल्ड अबाउट जुगलबंदी, सो विथ कंपैरिजन टू ओडिसी एंड सम अदर फॉर्म, how you prepare, how you confirm and how you go ahead for this Jugalbandi? Okay, so first thing I want to say that like my teacher, she used to do Jugalbandi with, she used to do Jugalbandi with Bharatanatyam, Kathak. So I noticed that and I observed it, and from that I learned a lot how to make a Jugalbandi or how to perform with a different kind of dance form. So I have learned from that, and it was in my mind, and when I will perform or I'll get a chance to do a Jugalbandi, so I'll try to keep that things in my mind and try to choreograph in that way, or not typically copying it, but the main essence I'll try to keep it. Mainly the Odissi essence will be there, and whatever the form I'll perform along with it, I'll try to make sure that the form remains its main essence. If the form can keep its essence, so that the both will never lost their flavor. The flavor will remain intact. इनका कहना कि इनके जो गुरु थे उनको कथक और भरतनाट्यम के साथ उन्होंने ड्यूएट करते हुए देखा है, और वो ड्यूएट को करने के बाद वो चीज़ें दिमाग में रख कर चलते हैं, और साथ ही इनका ये कहना है कि उसी तरह से अपनी कोरियोग्राफी करते हैं ताकि उसका जो फ्लेवर है, उसका जो फॉर्म है वो बरकरार रहे, ताकि लोगों को भी उसको देखने को आनंद आए। दिस ओडिसी डांस आई थिंक बेसिकली बेस्ड ऑन भगवान जगन्नाथ, मोस्टली दी डांस परफॉर्मेंस आर बेस्ड ऑन भगवान जगन्नाथ. So how this journey is going, and the traditional pattern is being changed
you are going through some other pattern also, or Bhagwan Jagannath is there also, always there? Bhagavan Jagannath is always there because the root is from that Jagannath temple. Okay, even when we start our dance recitals, we start with the Jagannath slokam, recitation about Lord Jagannath. So it will remain there. People can experiment, people can do many things, but you cannot take away Jagannath from the root, because he is the ultimate source of our Odissi dance. It's not about Odissi, he is the god of world. We say Jagannath, he is the god of the world. So of course, as when we dance Odissi, we cannot separate him. Okay. So what are future plans? My future plans, okay. I want to dance like this is my willingness to dance, but the situation is changing a lot. Like you don't know, because we never expected that COVID will hit us, especially to the artist, in such a bad way. Nowadays the chances for performing artist is becoming less. So but my plan is to keep trying hard, and let's see what is written for me, or what is there for my future. सौम्य की बातों से लगता ज़रूर है कि फ्यूचर प्लान को लेकर बहुत सारी बातें मन में हैं, लेकिन वो जुबान पर नहीं आ पा रही है। सौम्य का ये भी मानना है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, मैंने कहा कि भगवान जगन्नाथ से शुरू होता है आपका ये सफ़र ओडिसी डांस का, तो उनका कहना है कि जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ है वो, तो वो सबके भगवान हैं, तो उनको अलग रख के हम ओडिसी डांस नहीं कर सकते, और कोई भी जगत के नाथ या जगन्नाथ को अलग रख के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। What you say the present generation has changed a lot. They are much more not interested in going through the traditional dance patterns. They are going through a Western culture, and the viewers are now, I think, are less in all this kind of dance performance, traditional dance performance. So what do you say, and how we can go ahead and how we can increase the viewers? Yeah, because Western dance form, as like we say Western, actually the Western dance form comes from the Western countries. That when the name itself is like Western dance form. Like classical dance form, like they have a proper grammar, rules and regulation. It needs a lot of time to understand it, practice it, and then going to the someone goes to the stage. So it's a process. Nowadays people are going for people are going for fast food. They don't want to cook even in their home. So the mentality is like this. So you go and buy and eat and sleep. That's all. So that mentality reflects even in our education system, even in our cultural sector, sports, everywhere. Like now, before if you go to study, teacher teaches you properly. Now you go to a coaching center, they give you notes, and you just study those notes and go to the exam, and you get the result, because they give you the correct notes which will appear in the exam. And if that particular coaching center will give you some suggestion or tips which will help you for the exam, then 100% people will go to that specific coaching center. No one will go to the other coaching center or other teacher who teaches a very good lesson. It's not about the proper lesson, it's about more about result, more about the result. It's not about what you learn, it's about what is your result. So same thing in dance, like now people learn for 2-3 days and they want to get a chance to dance in the TV. So that's why so many reality shows are coming up everywhere, because their parents, I think it's not about the children, it's more about the parents, because I also teach many children, and even those who are growing up, I think the children are not so much worried about their future, but the parents are more worried,
because the children never ask me, sir, when I'll dance, but their parents keep asking me, sir, when my daughter will go to the stage. So that mentality is like affecting the children's. So the classical dance forms needs that, like that patience, that perseverance, that determination, so that the children for the future generation will learn that okay, we have a rich cultural dance form and we have a responsibility to keep that legacy. And I think it's the parents' responsibility to show them and take them in a correct path. बड़ा मौजूद क्वेश्चन था और उत्तर उतना ही सटीक था। सटीक इसलिए था कि हर व्यक्ति, हर माता पिता ये चाहता है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे को 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद कोई स्टेज मिल जाए। कम मेहनत, कम समय में प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है। उसके पीछे जिम्मेदार हम ही लोग हैं। और सौम्य का ये दर्द निकल कर बिल्कुल सामने आया है कि कोचिंग क्लास का एग्जाम्पल देकर कि कोचिंग सेंटर पर नोट्स मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं और उसको पढ़ते हैं और वही क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं एग्जाम से, तो जिसका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन एक टीचर कोई अच्छा पार्ट पढ़ाता है, अच्छा लेसन पढ़ाता है, तो उसके यहाँ बच्चों के जाने की संभावना कम होती है। तो तमाम सारी बातें, तमाम सारी विसंगतियाँ हैं, लेकिन जो क्लासिकल डांस है, चाहे वो ओडिसी डांस हो, चाहे वो कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, सभी तरह के डांसेस में डेडिकेशन और कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि जब आप इस तरह के फॉर्मेट में जाना चाहते हैं तो अपने बच्चों से किसी भी क्षण ये उम्मीद नहीं करें कि 8 दिन में इसको स्टेज मिल जाए। ऐसी उम्मीद ना करें कि हाथों हाथ प्रसिद्धि हासिल करें और खूब पैसा कमाए और हमारे लिए भी पैसा कमाए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के रिजल्ट लाना चाहते हैं बच्चों में जो लंबे समय, लंबी मेहनत के बाद मिले, तो उन्हें उसी तरह की शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। बहरहाल सौम्य, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।